असां सेशन जेको आहे असांजी डिस्कशन जेकी हूंदी हू इंग्लिश ऐं उर्दू में घणी हूंदी छो त असांजा जेका स्पीकर आहिनि मैडम सलमा आलम हू फ्रीक्वेंटली सिंधी ॻाल्हाइण में थोरी प्रॉब्लम थींदी आहे बट शी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज सो हीअं असां ॻाल्हाईंदासीं हिकिड़ी किताबु आहे इहो एजेंट्स ऑफ चेंज जे नाले सां जेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश कई आहे so we are going to talk about the book and as the title suggests, Agents of Change, the problematic landscape of Pakistan's K-12 education and people leading the change. So we are honored to have one such agent of change with us today. Thank you so much, Salma, for being with us once again. Salma Ahmed Alam का मुख्तसर तारुफ ये है कि सलमा एक एजुकेटर हैं एक इदारा है दूरबीन के नाम से जिसकी सलमा फाउंडर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं सलमा हेड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू फ्यूचर टीचर्स सो शी इज़ टीचर्स एजुकेटर ऐं हींअर जेको लास्ट सेशन हो उन में साईं डॉक्टर आफ्ताब अबड़ो चयो त उस्ताद खे पाण नथो अचे त हू शागिर्दनि खे कीअं ॿुधाईंदो सो आई जस्ट take this forward that how important it is for a teacher to know and then teach students. But before going to that, Salma is here with us as a founder and chief executive of Durbeen. I mean, not just as a founder of and chief executive of Durbeen, but kind of a face of different civil society organizations that are working in Pakistan in the K-12 education space. We have featured some of them in the book. The Citizens Foundation is one of them. Teach for Pakistan is another. Then we have featured Zindagi Trust and Shahzad Roy that Salma has helped a lot. And then there is another organization, Kiran Foundation. Sindh Education Foundation is going to have a session as well. So my first question for Salma would be on the role and the kind of contribution that these organizations are making despite facing all the different challenges on field, especially in the K-12 space. इतां जी आसानी लाइ ॿुधाए छॾियां त K-12 is a term that is used from kindergarten to grade 12. कच्ची जमात से 12वीं जमात तक की जो तालीम है उसके लिए K-12 की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है. So Salma, your take on the civil society organizations that are working in the K-12 space with the government, without the government. Thank you very much, Nadeem, यहाँ पे मुझे बुलाने का and to all of you for your audience today. जैसे आपने तारुफ में बताया, I run a non-profit organization जो teacher education में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है. Problems, इतने सारे challenges, लेकिन फिर भी ये शहर जो है वो खड़ा हुआ है और ना तो सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि it's also flourishing in its own way. So certainly I think Nadeem कुछ तो है, कुछ तो लोग हैं, कुछ है इस शहर में कि despite it all we continue to persevere. And जो institutions का आपने नाम लिया है, I mean those are one of many people जो अपना किरदार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, whether it's in education, I mean I know your book is specifically about education, but even in the other sectors, in the health space, in the arts, so on and so forth, you have this is civil society playing a very important role. Would you like me to speak about my interaction जो 3 इदारे आपने जिक्र किया? जी बिल्कुल. How do you see their existence? And then at the same time, I know the audience would be interested in that too. You have worked a lot with the governments. तो सरकार के साथ अक्सर एक there is a negative connotation attached with the government. और लोगों के तस्वुर में ऐसा नहीं होता कि someone like you, with top quality world class education would try to fix things by working with the government. So the question is two-pronged, like how do you see the existence of these organizations and then your take of working with the governments? मैं दूसरे सवाल से शुरू करती हूँ. देखें,
Actually, I think the two questions are related. Let me ask this question. देखिए, इदारे TCF जैसे किरण फाउंडेशन, SCF, बहुत सारे हैं जो, खैर SCF I don't think एक अच्छी मिसाल है, but essentially organizations जो प्राइवेट सेक्टर में आपकी लो इनकम पॉपुलेशन को एक अच्छी मेयार की तालीम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं. Why did they come to be, right? They've essentially come to be because the state education system has collapsed. And so there is this giant vacuum there that these civil sector organizations are trying to fill. So the point that I'm trying to make is, so first of all, why are they so important? Because without them, I mean, we all agree on this fact, at least this is my personal philosophy, कि जब तक government schools बेहतर नहीं होंगे, nations don't prosper. Because अभी भी आपकी जो vast majority बच्चे हैं, वो अपनी तालीम आपके सरकारी ही school से ले रहे हैं. So we cannot write them off and say, okay, let the private sector take on more and more of a role and eventually just take over the provision of education. That is not happening anywhere in the world, and that's quite problematic. Because private sector is inherently driven by profits, right? Quality तभी आती है जब उनको अपना मुनाफा इसमें नज़र आता है. So it's quite problematic जब आप education जैसी basic right private sector को इतनी increasingly दिए जा रहे हैं. But nonetheless, ये भी हम नहीं कर सकते कि बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें कि गवर्नमेंट बेहतर होगी तो ही सब तक अच्छी मेयार की तालीम जाएगी. So TCF and all these organizations are filling a very important gap, because we do have generations and generations that are coming up, and without organizations like TCF, they wouldn't have a future. And it's quite incredible. TCF has now been around for a few decades. अब finally जाके उनकी success stories नज़र आ रही हैं of individuals जो उनके school से निकल के higher education मुकम्मल करके अब doctors बन रहे हैं and leading universities. So it's very heartening. And of course we know in the absence of TCF ये नहीं होता, इनकी ज़िंदगी नहीं बदलती. So it's very substantial. Similarly, किरण फाउंडेशन का अगर आप लोग जानते हैं, लियारी में एक इदारा काम करता है. Again, an extremely difficult community to work in. और जो सबीना खत्री हैं, उन्होंने जो वहाँ पे एक अप्रोच लिया है, a whole family approach, जिसमें ना सिर्फ बच्चों की तालीम की बात हो रही है, but also their mothers. So it's a mother-child center, and the prerequisite है, अगर आप यहाँ पे admission ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने माँ के साथ आएँ. So she educates the children, she also educates their mothers. And so of course one can already imagine उसका spill over और multiplicative impact कितना होता है. अब मैं आती हूँ नदीम आपके दूसरे सवाल पे about working with the government. देखिए, of course I can't sugarcoat it. It's not easy. It's not easy. And here I think I'll also give credit to Durbeen sister organization Zindagi Trust, जिसके founder और president हैं शहजाद रॉय, जिन्होंने बहुत अपनी goodwill और अपनी एक celebrity status बहुत इस्तेमाल किया है दूरबीन के लिए भी दरवाजे खोलने के लिए. So I think full credit is due there. उनके जो अपने connections हैं in working with the government, we have leveraged all of those to bring Durbeen to what it is today. But having said that, देखें Sindh government is very interesting. देखें, I'll always say this about Sindh. हालांकि मैं किसी और शहर में भी नहीं रही हूँ, पूरी ज़िंदगी कराची में ही निकली है, लेकिन सिंध में जो भी मसले मसाइल हैं ना, I would always prefer to be in Karachi rather than anywhere else. And I don't say this just because एक पैदाइशी एक रिश्ता है, rather because देखें ideologically I feel Sindh is much more open-minded. And I think that ideology becomes all the more important जब आप तालीम की बात करते हैं, right? जब आपका larger political environment एक bigotry से भरा हुआ है, तफरीक से भरा हुआ है, ये चीज़ें एजुकेशन में आती हैं और ये आपके करिकुलम को वो काला करने लगती हैं और वो हर चीज़ में वो सीपेज होती है उस चीज़ की. सो एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आई वुड, अगर चेंज आना है ना एजुकेशन सिस्टम में, वो आना ही सिंध से है, जस्ट बिकॉज ज़्यादा रोशन ख्याली है, ज़्यादा ओपन माइंडेड है, ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, ज़्यादा टॉलरेंस है, एंड दीज आर, वी नो दिस, दीज आर द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. सो I don't know if I've answered your question, but Sindh government, yes, absolutely challenging, but at the same time, हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं तो ही उनके support के साथ पहुँचे हैं. So love-hate relationship है.
No, you have answered it so brilliantly and so wonderfully, and you have spoken our hearts by, giving this credit of openness to the land of Sindh. And I was just thinking that I would ask you a question about Zindagi Trust and Shahzad Roy, and perhaps it would get difficult for you, कि आप शहजाद रॉय की तारीफ कर सकें being a wife, but you did it with Zindagi Trust. So, Salma, my next question would be, a lot of education discourse, revolves around pehle to facilities and all of this, and now very recently on curriculum. But we hardly see anyone speak about the quality of teaching and the people who are eventually becoming teachers. I know you have been long struggling, bringing this very narrative into the discourse of education. So how do you see, and there is a huge gap. So I would like you to speak about the importance of quality teaching and quality teachers, and the gap that we are seeing, in Pakistan and specifically in Sindh, especially with the recent context that the government went to hire teachers, the test happened, the number of candidates who cleared the test and the number of candidates that were required by the system. So please. Nadeem, agar jo larger discourse hai, there is a reason that perhaps teacher quality does not feature that. ठीक है, वो बहुत एक simple इसकी वजह बनती है. वजह ये कि जब तक education जो है वो politicized रहेगा, तब तक आप long term reforms नहीं achieve कर पाएंगे, right? क्यों वजह? क्योंकि जब आपकी हुकूमत आती है power में, जैसे अभी आपकी PTI है federal में, उनका क्या गोल होता है? उनका गोल ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जो 10-15 साल बाद उसका फल है, या उनका गोल होगा कि अगले इलेक्शन से पहले मैं क्या क्विक विन्स कर सकता हूँ, राइट? सो obviously it's the latter. We understand that's how the political system works. But why is that so disadvantageous? It's because teacher quality is not a switch. It is not something कि एक दिन आपने on किया अगले दिन उसकी बत्ती जल जाएगी. I mean, after all, आप बात कर रहे हैं essentially changing human mindsets, changing human behaviors. We know this doesn't happen overnight. And सोने पे सुहागा, आपका wider education system टूटा हुआ है. Teachers कहाँ से आएंगे? इसी system से ही निकल के आएंगे, right? So मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी एक B.Ed college चला रही हूँ, उसमें तो सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि जो आपके ग्रेजुएट्स आ रहे हैं K-12 स्कूल से, डू यू थिंक दैट दे आर एट दैट इंटरमीडिएट लेवल? सही माने में अगर करिकुलम के हिसाब से चलें, ऑफ कोर्स नॉट. सो हमारी दुगनी वो है स्ट्रगल है, राइट? बिकॉज पहले हमने उनके जो 12 years ऑफ एजुकेशन के गैप्स हैं, वी फर्स्ट नीड टू फिल दोज, एंड आफ्टर दैट देन वी कैन टॉक अबाउट क्वालिटी टीचिंग मेथड्स. सो दिस इज़ व्हाई आई थिंक while we fully endorse कि जब तक public schools बेहतर नहीं होंगे, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आएगी, and while we also endorse कि the government has to play its role in the provision of education, but at the same time I do also think that there is some potential in public-private partnerships, right? Because the private sector can bring that continuity and that longevity जो government के side से शायद नहीं आ पाती है, because वो इतने election driven होते हैं, right? So maybe when governments can pair up with private sector organizations, over long-term projects, then one can expect to produce meaningful change that, election होए ना हो, जो भी government रहे, top पे ना रहे, at least civil sector का काम जो है वो जारी रहता है. So at least giving you again the example of my own organization, we're in a 10-year partnership with the government of Sindh. So regardless of what happens next year, हमारा जो एक goal है, जो establish हुआ है, we're going to keep cutting away at that, and inshallah bring about the changes that are needed in teacher education. Thank you, Salma. So my next question is, how do we attract talent towards the profession of teaching? I mean, it's very difficult. Even when I go to a public sector institution and ask people, what do you want to be once you step out of your undergrad colleges? So most of the responses are related to, the positions of power, the positions of prestige and money. So how do we, bring our best talent in the classrooms of K-12 space?
नदीम, ये आपने एक ज़ख़म पे आपने हाथ रखा है. देखें, दिस इज़ आवर ग्रेटेस्ट चैलेंज, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, राइट? B.Ed कॉलेज में who we hire to teach in the program, what we teach, what the curriculum looks like, what the facilities look like, ये सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं, राइट? और इसमें मैं चांद सितारे तक भी ले जाऊँ अपना कॉलेज. बट जहाँ बात आती है टैलेंट को अट्रैक्ट करने की towards teaching and having them take admission in this program and commit to the teaching career, that's a whole other complexity. There's no one single answer, but I'll try to answer this with as many, to cover as many facets as I can. देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना is we have to have some sort of mass media campaigns to change the perception of the teaching profession, right? लोग क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं, right? Because है उसका वो prestige है, उसका वो रुतबा है. And of course, when you are, at the top of your intermediate class and the world is your oyster and you can choose anything you want to do, why would you go for the one thing? मैं अपने जब students से बात करती हूँ, and some of them mashallah are coming with very high academic qualifications, वो लोग सब एक ही बात कहती हैं कि जब उन्होंने अपने family में जाके बताया कि I'm opting for this B.Ed program, सब ने बोला पागल हो गए हो, क्यों कर रहे हो? Why are you choosing teaching? तुम तो कुछ भी कर सकते हो. Why teaching? So this is where we stand right now, right? Teaching is almost seen as a profession जिसको कहते हैं ना plan C profession है, कि आपका पहला जो career choice था वो नहीं हुआ, दूसरा career choice था वो भी नहीं हुआ, चलो teaching की तरफ आ जाते हैं. So ये सबसे पहले I think, and how do we change these perceptions? Of course इसका भी complex जवाब है, because role models चाहिए. जब आपको नज़र आएगा एक ऐसी बच्ची जो कुछ भी किसी भी पेशे में जा सकती थी, उसने चूज़ किया कि उसने टीचिंग में जाना है, then of course that inspires others, right? That inspires other people who also have other choices but are choosing to become teachers. People who can articulate कि क्यों वो टीचर बनना चाहते हैं, right? ये तो कोई जवाब नहीं है ना कि पब्लिक सेक्टर नौकरी है, मैं आऊँ या नहीं आऊँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेरोल तो चलेगी, राइट? कोई एक जज्बा होना चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, बच्चों से लगाओ, पेशे से लगाओ. So we need role models. Then of course there are more administrative things. ये बेवकूफ़ी है हमारी उम्मीद रखना कि 4 साल की पढ़ाई में पूरा रगड़ा लगेगा इन टीचर्स का, लेकिन फिर तुमने 10,000 की नौकरी करनी है. Of course not, right? Return on investment भी हर ग्रेजुएट देखता है. आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं, आप देखते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में this needs to be financially viable, otherwise why would you? So there is that piece. Then of course if we talk about the public sector, उसमें फिर करियर ट्रैक भी देखा जाता है कि आज से 5 साल में 10 साल में where do I stand both in terms of my financial prospects as well as a career ladder. So इसका एक ये पहलू है. So work environment again another very important piece, because फिर मैं वही पूछूंगी, अगर 4 साल आपको एक बहुत मुश्किल B.Ed प्रोग्राम से गुजर के एक ऐसी इमारत में खड़े होकर पढ़ाना है जहाँ डर है कि कभी भी छत मेरे सर पे गिर जाएगी, मेरे पास कोई वॉशरूम नहीं है जाने के लिए, अगेन पागल ही है. और हैं पागल, शुक्र अल्लाह पागल हैं, कुछ हैं ऐसे पागल टीचर्स, लेकिन आम इंसान तो नहीं ये करेगा, राइट? सो वी नीड टू लुक एट दिस प्रॉब्लम मोर कॉम्प्रिहेंसिवली. कोई एक चीज़ को ठीक करने से फिर हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं दैट द एंटायर द इशू ऑफ अट्रैक्टिंग टैलेंट टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड. We are running short of time. I have just couple of questions again related to teachers, because in Sindh especially, because that's Sindh Literature Festival and I think audience interest is in Sindh as well. There was a time, of course centuries back, when Sindh had its own glory of attracting people because of its academic and intellectual richness. But that somehow waded in the last 7-8 decades. So first of all, I'll come to Durbeen. It's a wonderful initiative, and I thank you wholeheartedly for starting it. So what are your numbers? How many students do you have in the college right now? And as you said, do you think that people who are studying at Durbeen and are being taught by top faculty members, I know Theresa is sitting here, would they go and teach in a government school?
बिल्कुल नदीम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने जब हम ये पूरा मॉडल इन्विसेज कर रहे थे, हमने ये सारे सवाल अपने आप से पूछे. देखें, अगेन you can't expect a highly qualified teacher to go and work in a school जहाँ हर दिन उसका प्रिंसिपल से झगड़ा हो रहा है कि प्रिंसिपल कह रही है कि नहीं रट्टा लगवाओ, टेक्स्ट बुक से नहीं इधर उधर जाओ, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, शी इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट. या तो वो निकल ही जाएगी टीचिंग के पेशे से, या वो प्रिंसिपल की कहने पे चल चल के फिर शी विल जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक प्रॉब्लम. व्हाट वी आर प्रपोजिंग इज़ दैट हमारे कॉलेज के, कम अज़ कम मैं अपने कॉलेज की बात करती हूँ, then I'll talk about bringing this to a wider level at Sindh and then Pakistan as well. What we are saying कि हमारे college के graduates, they cannot be placed in dysfunctional government schools. हमारे teachers जो हैं, by the way, वो एक bond sign करती हैं जिसके तहत हम उनको 4 साल के लिए एक मुफ्त तालीम मैसर करते हैं, and in return they have to commit to teaching in a government school for 3 years. 3 years in a government school. That's the important point, because हम quality resource जो है government schools के लिए तैयार कर रहे हैं. So, लेकिन हम उनको सिर्फ कोई typical government school में नहीं डालेंगे, again for reasons I've just described. So what we are looking to do now, inshallah, when we start graduating teachers 1 year later, is partnering with organizations like TCF, like Zindagi Trust, Akhuwat, SEF, वगैरह वगैरह, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में कम अज़ कम माहौल बेहतर किया हुआ है. दोज आर मोर फंक्शनल वर्क एनवायरनमेंट्स, राइट? सो वहाँ पे सिर्फ कमी रह गई है ऑफ क्वालिटी टीचर्स, which is the piece that we can fill. Now coming to your question about, you know, how do we take this to a wider level? Abhi we are just the one college, right? And our student strength right now is about 110. It's a drop in the ocean, right? Teachers, Sindh में अगर हम हर साल की बात करें तो तकरीबन लगभग I think 3 to 5,000, somewhere around that. It's in the thousands is how many teachers is needed. So obviously जब तक आपकी पूरी teacher education machinery बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक मतलब we'll just be playing on the fringes. So मुख्तसर से I'll just add on our future plans. हमने दूरबीन को टीचर ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद को पिछले 3 साल में चलाते हुए एहसास हुआ है कि until we don't develop an institution to develop teacher educators, उस वक्त तक B.Ed colleges at scale नहीं change हो पाएंगे. So अब हमारा next step यही है that we're trying to put up a master's program to develop teacher educators for all B.Ed colleges, all teacher education institutions, first across Sindh and then across Pakistan. So advantage ये है, again, as you all know, government के बहुत बड़ी institutions हैं, बहुत space है. So same with our college, हमारे hostels तक भी बने हुए हैं. So you know the infrastructure is there. We can easily, inshallah, once we put up this program, we can have a residential component to then, you know, accommodate teacher educators, Ladkana se, Thatta se, all districts of Sindh, and then inshallah to the rest of Pakistan as well. और इस ज़रिए फिर हम B.Ed colleges Sindh, across Sindh, उनको transform करेंगे और फिर उनसे जो teachers निकलेंगे वो जाके फिर आपके agents of change बनेंगे in their respective government schools. Thank you so much, Salma. I think we are done with the time. आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस किताब के जो लीड ऑथर हैं अमजद नूरानी साहब, वो हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, इज़ देयर इन द US. उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये किताब लिखी, एंड ही हैज़ ट्रिगर्ड दिस डिस्कशन. और आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव सेलिब्रेटेड one such agent of change today with us, who is not only driving change but also inspiring change around her. So thank you so much, Salma, for what you do. Thank you so much. आप सबका बहुत शुक्रिया.